Hello students, welcome back to Tuition Masters, and today we are here with doing your life processes के competency based questions. So पिछले competency quiz हमने किए थे on chemical reactions, आज हम करेंगे life process के and to your knowledge लाइफ प्रोसेस के थोड़े से ज़्यादा है कंपेटेंसी आई गेस 2024 है समवेयर सो हाँ हम लोग करेंगे बट आई विल इंश्योर दैट इट विल बी फन क्योंकि ये दीज क्वेश्चन आर नॉट देयर इन योर एनसीईआरटी है ना डायरेक्ट नहीं इसमें थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ता है सो दीज आर क्वाइट इंटरेस्टिंग टाइप ऑफ क्वेश्चन सो लेट्स बिगिन सो बिफोर स्टार्टिंग मेक श्योर टू लाइक द लाइक बटन शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ एंड सब्सक्राइब करो चैनल को राइट अवे एज यू नो आई से दैट इन एवरी वीडियो और जस्ट द लाइफ प्रोसेस का स्टार्ट करते हैं सो फर्स्ट सबसे पहला हमारा चाहिए था assertion reasoning. Warm blooded animals have their left and right side of the heart separated for more efficient supply of oxygen to the body. Is that true? We are warm blooded and we have separate right ताकि oxygen को body को oxygen मिले right. So this is a true statement. Very good. Next is warm blooded animals need high energy to maintain their body temperatures. Yes, हमको हाई एनर्जी लगती है टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए सो बोथ आर ट्रू नाउ वी नीड हाई एनर्जी है ना एनर्जी कहाँ से मिलेगी ऑक्सीजन के थ्रू सो दैट्स वाई वी आर वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिज्म सो क्या होगा दैट इज द करेक्ट explanation as well. Okay, now come here. अभी हम ह्यूमन के हीमोग्लोबिन और प्लांट के क्लोरोफिल की सिमिलैरिटी देख रहे हैं. A molecule of hemoglobin is composed of 4 atoms: carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, and they are organized around iron. A chlorophyll is composed of the same elements which are organized around magnesium. अब देखो सी ये F इधर है कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन somewhat like this is for your hemoglobin or same pattern like this is for your chlorophyll है ना so question says considering the above information which element of hemoglobin is most likely to responsible for red color now you will be seeing that difference क्या आ रहा है क्लोरोफिल ग्रीन है हीमोग्लोबिन रेड है वाई सारे एलिमेंट सेम है एक्सेप्ट फॉर वन दैट इज आयरन सो आयरन इज योर आंसर एंड इवन यू माइट हैव नोन कि जब हीमोग्लोबिन की कमी होती है द ब्लड इज नॉट रेड वी ईट आयरन रिच फूड है ना बीट रूट्स एंड ऑल ऑफ दैट सो दैट हमारा हीमोग्लोबिन बढ़े सो ऑब्वियसली आयरन इज द आंसर if you didn't even read the whole thing from here also you can get the answer. Okay, many processes happen in the body, yes we know those processes which involve the building of complex molecules from simpler are called anabolism. Metabolism के दो types होते हैं anabolism and catabolism. Anabolism मतलब complex से simple ठीक है catabolism मतलब complex molecules to simpler ones breakdown ठीक है ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स टू सिंपल तोड़ना और बिल्डिंग अप ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल सिंपल सॉरी ये सिंपल से कॉम्प्लेक्स एनाबॉलिज्म और कॉम्प्लेक्स से सिंपल कैटाबॉलिज्म सो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एनाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म मतलब सिंपल सब्सटेंसेस से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बनाएंगे सो वी नो दैट हैपेंस इन प्लांट्स फोटोसिंथेसिस कार्बन डाइऑक्साइड वाटर क्लोरोफिल ये सारे क्या है दीज आर ऑल योर सिंपल सब्सटेंसेस उससे हम बनाते हैं C6H12O6 ग्लूकोज इतना कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल सो यस फोटोसिंथेसिस इज एनाबॉलिज्म ऑलराइट नेक्स्ट आई डोंट अंडरस्टैंड इतने पेजेस क्यों छोड़ते हैं देखो दिस मच पेज एक क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे एनीवेज अब एक्सक्रीशन पे वी हैव द डायग्राम है ना ये कुछ डायग्राम है क्या नेफ्रॉन का डायग्राम है ओके वी कैन सी दिस इज योर आई गेस एफरेंट efferent arteriole this is your collecting tubule this is your Bowman's capsule right I guess that's Bowman capsule okay no that's glomerulus okay which row
of the following table shows where filtration and selective reabsorption occur. ओके मतलब अल्ट्रा फिल्ट्रेशन और ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है इन आर टर्म्स एंड हाउ आई एक्सप्लेन यू, सो दैट वी हैव टू फाइंड रीअब्जॉर्प्शन. Reabsorption will obviously take place where our reabsorption will takes place in, let's come back, हाँ, so reabsorption will take place in R है ना. Yeah, I guess this is our, हाँ, okay, this is our PCT, proximal convoluted tubule. Okay, that's not the arterioles, these are the, हाँ ये PCT है, proximal convoluted tubule है ना. तो R में होगा क्या, रीअब्जॉर्प्शन. ओके, रीअब्जॉर्प्शन आर में होगा, उधर से पीसीटी एंड डीसीटी रीअब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस. ओके, आर इसमें भी है. अब फिल्ट्रेशन का देखना पड़ेगा. फिल्ट्रेशन कहाँ पे होगा, फिल्ट्रेशन, हाँ, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन. व्हाट इज द अदर नेम ऑफ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, इट इज ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, राइट. सो ऑब्वियसली क्यू में होगा फिर, है ना. सो क्यू में होगा फिल्ट्रेशन, पीसीटी मतलब आर में होगा सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन. सो 3 इज योर आंसर. सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन को हम ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन भी बोलते हैं. व्हाई, बिकॉज ऑफ पीसीटी और डीसीटी में होता है. सो क्यू एंड आर द राइट आंसर. नेक्स्ट वन, which row in the table below shows the correct products of anaerobic respiration in humans and yeast. I'll write it, हम लोग खुद से लिखते हैं पहले. ह्यूमंस में वी हैव कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, है ना. ईस्ट में वी हैव एथेनॉल एंड CO2. ठीक है, चेक करते हैं. ह्यूमंस में, अच्छा, ओके सॉरी एनारोबिक बोला उन्होंने. ऑल राइट, आई थॉट इट्स एरोबिक. ओके, सो एनारोबिक में, एनारोबिक रेस्पिरेशन में लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होगा देन, राइट, लैक्टिक एसिड. ओके, सो ह्यूमंस, पहले ये दो ह्यूमंस का है, फिर ये दोनों ईस्ट का है. सो ह्यूमंस में लैक्टिक एसिड इज प्रोड्यूस्ड, यस इट इज प्रोड्यूस्ड. ओके, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ दो, लैक्टिक एसिड में देखते हैं अभी. ईस्ट में कौन सा लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस है, नो, ये तो पूरा रो ही गलत है फिर. सो दिस विल बी एक्स. सो ये दोनों, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, yes, carbon dioxide produced here, so that means our second option is right. humans में lactic acid produce होता है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता. ईस्ट में lactic acid नहीं होता, कार्बन डाइऑक्साइड होता है. ओके, so see, that's your very critical thinking. All right, next, gastroparesis is a disease in which the muscles of the stomach become paralyzed and cannot contract or relax. Wow. Foods high in fat can delay the process of digestion and emptying of the stomach. Which of the following would be advised to a patient suffering from gastroparesis? अब देखो, गैस्ट्रोपैरासिस मतलब स्टमक पैरालिसिस. अब फैट्स में तो ऑब्वियसली बहुत सारा कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करना पड़ता है. सो दैट मीन्स वी नीड समथिंग विच डज नॉट हैव दिस काइंड ऑफ थिंग्स. सो सूप्स और जूसेस में कौन सा फैट्स होता है, तो वही पी के जिंदा रहो. ओके, सो सूप्स एंड जूसेस आर बेस्ट. सूप, चिकन सैलेड, ये चिकन सैलेड, हु विल डाइजेस्ट द चिकन विद गैस्ट्रोपैरासिस, है ना. सो सूप्स एंड जूसेस इज राइट. नेक्स्ट, which row of the table given below shows the movement of gases across bloods and cells के through. Okay, oxygen from RBC, carbon dioxide to cells. Process, diffusion या osmosis takes place only and only in water. So obviously diffusion होगा. So या तो 1 है या तो 4 है आंसर. Okay, next, from cells to up to RBC से ऑक्सीजन फ्रॉम RBC एंड कार्बन डाइऑक्साइड टू सेल्स, है ना. डिफ्यूजन होके कहाँ पे जाते हैं, दे गो इन द प्लाज्मा थ्रू डिफ्यूजन. RBC में वापस क्यों जाएगा, इट गोज इन द प्लाज्मा ऑफ द ब्लड. सो 4 इज द राइट आंसर, है ना. ओके, वेट, व्हाट इज द ऑप्शन, which of the table given below correctly gives the, हाँ, so 4, S, where is this, PQRS. Okay, S is the answer. Okay, this is, I guess, PQRS, है ना. हाँ,
That should be answer. S is the answer. Okay, 4 is the answer. Next one. X says that amount of carbon dioxide per molecule of glucose during aerobic respiration. Okay. Y amount of carbon dioxide produced per molecule during fermentation. फर्मेंटेशन मतलब ईस्ट के अंदर एथेनॉल और उसके अंदर, तो क्या होगा, एक्स और वाई में कौन बड़ा कौन छोटा। फर्मेंटेशन में, ओके, फर्मेंटेशन में और यूजुअली कम होता है प्रोड्यूस, सॉरी कम होता है प्रोड्यूस। सो इन आर ह्यूमन बॉडी ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल होता है, राइट। सो दैट मीन्स 8 इज 1, एक्स इज मोर देन वाई। ओके, ऑलराइट, सब्जेक्टिव। ह्यूमन बींग्स एग्जिबिट डबल सर्कुलेशन, हाँ हमारे पास 2 बार ब्लड आता है, ओके, ड्यूरिंग विच ब्लड इज पास थ्रू द लंग्स एंड द हार्ट। ओके, स्टेट द रूट ऑफ द फर्स्ट एंड सेकेंड सर्कुलेशन। ओके फाइन, एंड एक्सप्लेन द यूजफुलनेस ऑफ सच सर्कुलेशन। देखो आई टेल यू, चलो इधर ही लिखते हैं। फर्स्ट सर्कुलेशन में, फर्स्ट सर्कुलेशन में क्या होता है, हमारे लंग्स में से, ओके, लंग्स में से हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड गोज टू द लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, ठीक है, दी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ओके, सेकेंड टाइम सर्कुलेशन में हमारे बॉडी से आता है डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो जाता है राइट एट्रियम में टू द राइट वेंट्रिकल, है ना। इससे क्या होता है, द ब्लड इज सेपरेटेड, ब्लड जो है वो सेपरेटेड रहता है, मिक्स नहीं होता। ओके, नेम द ब्लड वेसल्स दैट कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू द हार्ट। लंग्स से हार्ट तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन कैरी करता है, दैट इज योर पल्मोनरी वेन। सो दिस बिकम्स योर पल्मोनरी वेन। और दूसरा, द कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू द लंग्स, हार्ट से लंग्स तक, है ना, अवे, वो भी डीऑक्सीजनेटेड, सो दैट इज योर पल्मोनरी आर्टरी। ओके, आई हैव मेड अ वीडियो ऑन ट्रांसपोर्टेशन, हर एक वीडियो है ऑलरेडी अवेलेबल, आई विल अटैच इन द आई सेक्शन, डोंट वरी। ओके, a major portion of carbohydrates produced by plants is stored in different parts of the plant storage organs. Explain the mechanism by which this stored food is made available when different organisms need it for growth. अब देखो, what happens is carbohydrates, let's say it is stored in the form of sugar, है ना, शुगर के फॉर्म में। अब इसको जाना है फ्लोएम में। If it reaches to phloem, it will reach the phloem with the help of energy. एनर्जी के हेल्प से जो स्टोर्ड कार्बोहाइड्रेट है, शुगर है, वो फ्लोएम में जाएगा, राइट। सो व्हाट हैपेंस, फ्लोएम में कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है ड्यू टू विच ऑस्मोटिक प्रेशर ऑल्सो इंक्रीजेस, ऑस्मोसिस के चांसेस बढ़ जाते हैं और वाटर अंदर आ जाता है, बिकॉज दैट बिकेम्स लाइक अ हाइपोटोनिक ना, अंदर आ जाएगा पानी, है ना, बिकॉज शुगर एक जगह पे कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, दूसरे पे कम है, हायर टू लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर, है ना, सो दैट विल डू इनटेक ऑफ वाटर। सो दैट्स हाउ द प्रोसीजर वर्क्स ओवर हियर। ओके, in human beings, hormonal action is largely controlled by mechanism where the secretion of one hormone is regulated by the action of another. An example of blood glucose levels control is shown in the diagram. This should be your control coordination. Why here? Okay. Stimulus goes to the sensor, goes to the evaluator, goes to the effector. This is purely your what do we say? Purely your control coordination. एंड प्लाज्मा, अगर ग्लूकोज बढ़ जाता है, सो समथिंग एंड इंसुलिन। सो व्हाट इज दिस मैकेनिज्म नोन, दिस मैकेनिज्म इज नोन एज अ फीडबैक मैकेनिज्म, है ना, हम कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में पढ़ेंगे। दिस इज योर फीडबैक मैकेनिज्म ऑफ द हार्मोन, which is the sensor X that helps in detecting blood glucose level.
ब्लड ग्लूकोज लेवल कौन से? हमारे पैंक्रियास के सेल्स, दे आर नोन एज बीटा सेल्स, बीटा सेल्स और सेल्स ऑफ पैंक्रियास, पैंक्रियास के सेल करते हैं, देन दे रिलीज द insulin. What would happen if such a mechanism is absent? Such mechanism is absent, so your glucose level will be disturbed, है ना, ग्लूकोज लेवल बढ़ता ही जाएगा फिर. ओके, नेक्स्ट वन. Oh my god. Okay. Not all plants carry out photosynthesis by the same mechanism. Most of this, okay, however, some plants in pineapple have the ability to store carbon dioxide in the leaves or the vacuoles. Okay, fine. Complex is converted to release. Okay, blah, 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 blah. Okay, you can read. Which process in plants does photosynthesis mechanism minimize to help the plant to survive in dry conditions? ड्राई कंडीशंस में कौन सा मैकेनिज्म हेल्प करता है जो कम हो जाता है? दैट इज योर ट्रांसपिरेशन, है ना. नो नीड टू रीड दैट, इधर से आंसर दे दो. ट्रांसपिरेशन, बिकॉज ट्रांसपिरेशन मतलब लॉस ऑफ वाटर, है ना. वाटर वेपर्स का जिसमें भी लूज हो रहा है, लूज तो हो ही रहा है ना, तो ट्रांसपिरेशन कम होता है इन जेरोफाइट्स, जो योर कैक्टस हो गया, ऑल ऑफ दैट, राइट. सो उसमें ज़्यादा पानी बना रहा है. How is the ability to store carbon dioxide as a complex compound likely to help to minimize the process referred to in A? ठीक है, ए में कैसे स्टोर होगा, मतलब जीरो फाइट्स में कैसे होगा? सो द स्टोर्ड कार्बन डाइऑक्साइड विल बी यूज, है ना, वो यूज हो जाएगा. और स्टोमेटा ओपन नहीं होगा, द स्टोमेटा वोंट ओपन ड्यूरिंग द डे टाइम, स्टोमेटा वोंट ओपन फॉर फोटोसिंथेसिस ड्यूरिंग डे टाइम में, अभी क्लोज रहेगा स्टोमेटा, सो वाटर लॉस के कम चांसेस होंगे. सो दैट्स हाउ इट इज यूज्ड. वेन आर सच प्लांट्स लाइकली टू टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड? अब सुबह तो ले नहीं रहे, सो ऑब्वियसली नाइट टाइम पे लेंगे फिर, है ना. सो नाइट टाइम में कार्बन डाइऑक्साइड इज टेकन. Okay, next. When some particles like sand or dust fall into our eyes start to water on their own and we blink to get the particle out. This is a type of reaction to a stimulus. How is this even life processes? Is the above mentioned voluntary or involuntary? Obviously involuntary. हम तो नहीं, हाँ आंखें पानी भेज दे, नहीं. It's involuntary. Automatically it happens. What is the specific name given to the pathway that brings about this immediate reaction? That is a reflex arc. Oh no, this is totally control coordination. What are the names given to the organ that responds to a stimulus, that is the effector? effector होता है जो response with the stimulus को, or the part of the brain that receives sensory impulses. That is not the effector का opposite वाला. It is not that. That is the forebrain. forebrain, hindbrain, midbrain, है ना. तो forebrain में sensory impulses आते हैं. ओके, इन द, हाँ, रिसेप्टर मत लिख देना. हाँ, इफेक्टर का ऑपोजिट रिसेप्टर, रिसेप्टर मत लिखना. इन द ब्रेन उन्होंने पूछा, दैट इज फोर ब्रेन. ओके, wow, let's me scroll the wasted pages. Okay, a Weddell seal, a deep sea living mammal, has special adaptations that enable it to survive, respire for long periods. Okay, when diving, the blood flow to all parts of the seal body is reduced by 80 to 95%. Okay, and except for closed circuit between lungs, heart, and brain, 70% of oxygen is in the seal's body stored in the blood and hemoglobin, as compared to just 51% in humans. 25% of oxygen in seal's body stored in the muscles in myoglobin, as compared to 13% in humans. Now these type of questions can come definitely. In 1980, a group of scientists carried out an experiment to understand how a Weddell seal respires underwater during durations. After each dive completed by the seal, they measured the concentration of lactic acid anaerobic respiration में. So, स्टार्टिंग के 10-20 मिनट्स में कम था, बट एज वी गो आफ्टर डाइविंग वो बढ़ता जाता. देयर इज इंक्रीज इन लैक्टिक एसिड फॉर श्योर. सो बेस्ड ऑन द ग्राफ, what can be inferred about the change in the respiration? So what can be there?
इन द चेंज ऑफ रेस्पिरेशन. सो मोस्टली ये जो फर्स्ट मिनट्स है, दिस इज योर एरोबिक, दिस इज डेफिनेटली एरोबिक रेस्पिरेशन. बट जैसे हम ऊपर जाते जाते हैं, इट स्टार्ट्स एनएरोबिकली रेस्पायरिंग, है ना. एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है, इस वजह से लैक्टिक एसिड इज प्रोड्यूस्ड, है ना. Then adaptation R helps the seal helps the seal the most to produce energy for swimming during the first 20 minutes. Explain why P and Q. अच्छा क्या था, R क्या था? R था, ओके. सो 25% ऑक्सीजन इन द मसल्स, मसल्स में स्टोर हो रहा है, राइट. मूवमेंट के लिए, स्विमिंग के लिए मसल्स रिक्वायर्ड होते हैं. सो ऑब्वियसली लैक्टिक एसिड, सॉरी, क्या होगा हमारा ये, मोस्ट ऑफ द एनर्जी हमको मसल से चाहिए. अब पी क्यू में तो ब्लड का हो रहा है, सो दैट्स नो यूज ऑफ दैट, बट मसल्स में स्टोर होगा, दैट्स वाई. सो 14th इज योर डन. ठीक है. बाप रे, बहुत बड़ा क्वेश्चन था, और बस 2 क्वेश्चन निकाले उसमें से. अनीता कंडक्टेड एन एक्सपेरिमेंट टू एग्जामिन फोटोसिंथेसिस इन एक्वेटिक प्लांट्स kept in a tank by measuring dissolved oxygen. She plotted her results in the graph. Okay. सो 7 पहले ही हो गए, ओके, बढ़ते गए. ऑलराइट. शी रिपीटेड द एक्सपीरियंस व्हाइल कवरिंग द टैंक विद एन ओपेक ब्लैक क्लॉथ. उसको कवर कर दिया टैंक को, तो ऑक्सीजन लेवल कम हो गया. सो व्हाट कुड बी द एम टू डू दिस. इसका एम क्या होगा. अब देखो, कवर कर दिया मतलब शी वांटेड टू चेक कि अगर लाइट ज़रूरी है कि नहीं फोटोसिंथेसिस के लिए. Apart from photosynthesis, what other cellular process can be observed? There will be photosynthesis, नहीं तो क्या हुआ, respiration हो जाएगा, right? So respiration will take place. Next, why does the oxygen level rise in graph X? Because the presence of light is there, so photosynthesis होता रहता है. और explain the downward slope of graph Y. Y हो रहा है because यहाँ पे respiration हो रहा है और ऑक्सीजन यूज हो रहा है जितना भी बचा हुआ है. ओके. सो नो न्यू ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड. 16th, terrestrial animals use lungs to breathe, while aquatic animals like fishes use gills to absorb dissolved oxygen. Frogs are amphibians, जो दोनों वाटर और लैंड पे होते हैं. तो अब बताओ, हाउ डज फ्रॉग एक्वायर ऑक्सीजन वाइल अंडर वाटर. फ्रॉग अंडर वाटर में अपने गिल से ही लेगा, अंडर वाटर वो गिल से लेगा, एंड ऑन द टेरेस्ट्रियल वो लंग से लेगा. आर लंग्स ऑफ टेरेस्ट्रियल एनिमल्स एंड गिल्स ऑफ फिशेस एनालोगस ऑर्गन्स. एक्सप्लेन वाई और वाई नॉट. सो हाँ, वो एनालोगस होते हैं. एनालोगस मतलब डिफरेंट स्ट्रक्चर, उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट है बट सिमिलर फंक्शन है. सो यस, वो एनालोगस है. नेक्स्ट वन, why do aquatic animals have higher breathing rate. ये तो एक एनसीईआरटी क्वेश्चन है. हायर ब्रीथिंग रेट क्यों होता है. बिकॉज वो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन को लेते हैं, दे इनटेक डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, है ना. सो दैट इज वाई. नेक्स्ट वन थोड़े से और है. इमेज बिलो शोज द क्रॉस सेक्शन ऑफ अ ब्लड वेसल. वाओ. ह्यूमन नाम में से विच टाइप ऑफ ब्लड वेसल इज शोन. विच टाइप, इसमें वॉल्व्स है. ओके, वॉल्व्स आर प्रेजेंट इन द वेन्स ओनली. ठीक है. देन विच डायरेक्शन ब्लड फ्लो. ब्लड इधर से थोड़ी ना आएगा, इधर से ऑब्वियसली जाएगा ना, ताकि वाल्व्स है उधर. सो फ्रॉम पी टू क्यू. पी टू क्यू. We often hear people complain about acidity in the stomach. Overproduction of what substance? Overproduction of your hydrochloric acid. Why is the production of this substance necessary for activating pepsin, है ना, पेप्सिनोजन को आप वो करने के लिए एक्टिवेट. हाउ डज इट स्टमक प्रिवेंट इट सम हार्मफुल इफेक्ट्स बाय द म्यूकस. म्यूकस प्रोटेक्ट. ये एक थोड़ा इजी सा क्वेश्चन था, डायरेक्ट क्वेश्चन था, करेक्ट. ऑलराइट. नाउ there are various muscles present in the human system known as sphincters. Pyloric and anal. There is one more. I'll tell you that at the end. Pyloric sphincter at the junction of stomach and small intestine. Anal sphincter at the anus. Give one most likely consequence of malfunctioning. अगर इसका malfunction हो गया तो क्या होगा. So
पहले वाले का माल फंक्शन, स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के पाइलोरिक स्फिंक्टर में कुछ प्रॉब्लम आ गई, सो फूड गेटिंग इन टू द स्मॉल इंटेस्टाइन विल बी टू फास्ट और पुअर डाइजेशन, क्योंकि फटाफट आ जाएगा खाना, प्रॉपरली धीरे धीरे नहीं आएगा, फुल आ जाएगा बिकॉज स्फिंक्टर नहीं है। और एनस में क्या होगा, इनवॉलेंटरी रिमूव, दिस इज योर प्रॉब्लम, ये बन जाएगा इनवॉलेंटरी मूवमेंट की फीसिस जो होती है राइट, द पॉटी इट विल गो आउट एनी टाइम राइट, इनवॉलेंटरी फीसिस का एक्सक्रीशन हो जाएगा। अब देखो, one more sphincter is there between the stomach, sorry not stomach, esophagus, esophagus और stomach के बीच में भी एक स्फिंक्टर होता है, दैट इज नोन एज द गैस्ट्रो ईसोफेगल स्फिंक्टर, ठीक है, वो भी एक स्फिंक्टर है। ओके नेक्स्ट, अच्छा अभी प्लेसेंटा भी आ गया, वाह। द डेवलपिंग ह्यूमन एम्ब्रियो गेट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम द मदर थ्रू अ स्पेशल टिश्यू कॉल्ड प्लासेंटा. Mention two structural designs of the placenta that help the embryo to get nutrition. Again, this is how do organisms reproduce. So क्या होता है, it has a villi, villi होता है, अच्छा villi is there in the placenta and even there it has blood spaces है ना, blood spaces होती है ताकि अच्छे से nutrition मिल जाए from the mother's blood. Is the placental tissue designed for one-way transport? Justify. No, one-way transport नहीं है, because waste generated है ना, खाना तो आ रहा है, the food is coming, बट जो बच्चा है वो खाना खा के वेस्ट भी तो निकालेगा, द फीटस है ना, तो द वेस्ट इज ऑल्सो गिवन, सो इट्स अ टू वे ट्रांसपोर्ट, प्लेसेंटा एक टू वे ट्रांसपोर्ट होता है। आई गेस वी आर ऑलमोस्ट डन। Arthropods and mollusks have a copper containing respiratory pigment called hemocyanin, while human beings have iron containing hemoglobin. How do respiratory pigments help in the process of respiration? हाँ, और कौन प्रोसेस में हेल्प करेगा, बिकॉज प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन हमको चाहिए होता है ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर, आर्थ्रोपोड्स मॉलस्क को चाहिए होता है फ्रॉम द वाटर है ना, सो ऑब्वियसली वी नीड द respiratory pigments. Why do multicellular organisms need a respiratory pigment? Because our body size is large. We are very huge. So इस वजह से ताकि हर जगह diffusion हो सके easily, we need the pigments. Are we done? Done. So with this we have completed with our competency based question for your chapter life processes. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई बी सीइंग इन नेक्स्ट वीडियो, हम लोग कंट्रोल कोऑर्डिनेशन स्टार्ट करेंगे। सो बिफोर एंडिंग मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ एंड सब्सक्राइब द चैनल राइट अवे। आई बी सीइंग यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, सो देन टेक केयर एंड गुड बाय।